इस लीगल आई के अंतर्गत आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 5वां चैप्टर, चैप्टर 5th, wherein there is a provision with regard to arrest of persons from section 35 to section 62. However, today's topic is section 35, wherein there is a provisions, there is some aspects covered that in which case arrest will be done without warrant or without any order of the magistrate. Okay, clear? So there are 7 clauses under section 35. Total, how many clauses are there? Total 7 clauses under section 35. Therein, you will find that there is a provision with regard to the arrest without warrant in cognizable offenses, and second, there is a provision with regard to non-cognizable offense. So section 35 deals with the provisions with regard to the cognizable offense and non-cognizable offense. As far as warrant or arrest without warrant or without any order is concerned, I am not dealing with right now. I will be dealing in the next video so that you can understand in a better way after going through the all provisions or all provisions of the clauses given in section 35. So total 7 clauses are there. Section 35 clause 1, it talks about provision with regard to arrest without warrant or without any order of the magistrate. But I am not dealing here. Okay. But other provisions are there which is very much relevant to understand. Clause 2 to 7, I will be dealing in a point wise. I will not be mentioning the clauses. However, the relevant points given therein, it will make you clear for your judicial examination as well as LLB academic course. Okay. तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सेक्शन 35 की क्लॉज 2 से स्टार्ट होता है, जो जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है. नो अरेस्ट विल बी डन इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. In case of non-cognizable offense, if even though there is information or credible information without warrant, means in case of non-cognizable offense, there will be no arrest without warrant or an order of the jurisdictional magistrate. Okay. Second point deal करता है, means next point, that is clause 35(3), wherein it has been discussed that in case police is not going to arrest, or if police think there is no requirement of arrest in a cognizable offense without warrant, which has been discussed in section 35 clause 1, which I will be dealing with in the next class. In that case, मतलब ये मान के चलिए कि जिस केस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने का प्रोविजन है और पुलिस अगर अरेस्ट नहीं करती है रीजनेबली, जो भी रीजन रिटन रीजन होगा, then police will issue a notice to the concerned person having some provisions to comply, like appearance or like production of the documents or whatsoever. Correct? In the next point, you will find that the person concerned has duty, matlab he is duty bound to comply the notice as per the provisions, as per the content given in the notice. मतलब अगर नोटिस में लिखा है कि आपको इतने बजे इस पुलिस स्टेशन में आना है तो आना है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट के साथ या डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो भेजना है. मतलब once a notice has been issued to the concerned person with regard to the cognizable offense where arrest may be done without warrant, in that case the concerned person receiving the notice has to comply the provisions given in notice. Okay, चलिए. Now next question is, if he does not comply to the notice, then what will happen? It means that non-compliance or continuous non-compliance of the person or ignorance to identify himself as the person concerned, then police may arrest immediately. Police is empowered to arrest him subject to other orders or conditions. Okay. Next है, अगर वो comply कर रहा था तब भी क्या arrest किया जा सकता है? Of course, if the person concerned receiving the notice is complying and continuously complying the provisions of the notice, still if police thinks so reasonably to arrest is required to arrest him, he can arrest. Okay, he can arrest subject to order of the magistrate and whatsoever. Okay, compliance में भी arrest किया जा सकता है अगर पुलिस को ऐसा लगता है तो. चलिए. Now
ये हो गया कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कहीं ऐसा पता लगा कि एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें प्रोविजन 3 साल से कम है, प्रोविजन हैविंग less than 3 years. What? Less than 3 years. It means what will happen? And the person who is supposed to be an accused is of infirm and senior citizen above 60 years. Then in that case, arrest will be done only with the permission of the deputy superintendent of police. मतलब डीएसपी के परमिशन के बिना कोई भी इन्फॉर्म पर्सन या सीनियर सिटीजन मतलब एबव 60 इयर्स के एज के द्वारा कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 3 साल से नीचे का पनिशमेंट है या प्रोविजन दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 ईयर, इन दैट केस परमिशन ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का परमिशन जरूरी है, रिक्वायर्ड है, देन ओनली पुलिस कैन अरेस्ट हिम, अदरवाइज ही विल द कंसर्न सो कॉल्ड एक्यूज्ड कैन नॉट बी अरेस्टेड। ओके, तो ये सारे प्रोविजन जो थे सेक्शन 35 की क्लाउज 1 से लेके क्लाउज 7 तक जो दिया गया था, आई हैव डिस्कस अबाउट दैट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग अबाउट द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द अरेस्ट विदाउट वारंट और विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, दैट इज सेक्शन 35 क्लाउज 1। ओके, एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, what is compounding, these all things I have already discussed in the previous video, you can watch। and guys, I am request you all, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।